Welcome to the class. Physical chemistry introduction class सरी जाइछि पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले context and chemistry and its scope, matter and energy, classification of matter रे physical classification पर्यंत आमे कवर करिथिले। आज आमे स्टार्ट करिवा chemical classification matter रो chemical classification आमे करिवा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़थिले मैटर केते प्रकार फॉर्म रे रहे सॉलिड लिक्विड एंड गैस फॉर्म रे रहे जोटा कि होतर फिजिकल क्लासिफिकेशन। आज होची पढ़िवा केमिकल क्लासिफिकेशन कोन मैटर एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस। मैटर नेचर को बड़ा रहे ना केमिकल सब्सटेंस भाबे रहे। प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड as a variety of matter all samples of which have same composition and properties। प्योर सब्सटेंस हला कोन प्योर सब्सटेंस होची गोटे वेराइटी ऑफ मैटर वेराइटी से और से वेराइटी ऑफ मैटर से फिर कोन थिबो दर कंपोजिशन प्रॉपर्टी जे सेम थिबो जहार सेम कंपोजिशन प्रॉपर्टी थिबो जो वेराइटी ऑफ मैटर सेटा हबो कोन प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस डिवाइड करा केमिति ना एलिमेंट्स भाबे एंड compounds have pure substance को divide करा जायछि। Most of the materials found in nature are in the form of mixtures containing two or more substance। Nature जो material मिले से के कोबड़ा हमें थाए ना मिक्सचर हमें थाए। मिक्सचर फिर कौन मिक्सचर होची consisting of two or more substance मिसी की जहाँ pure substance मिसी थिले से रहबो कोन मिक्सचर हबो। There are two types of mixtures। The mixture फेरे two types अछि गोटे होछि homogeneous mixture आ गोटे heterogeneous mixture अछि आ गोटे heterogeneous mixture अछि। homogeneous mixture कोन जहार प्रत्येक जो कंपोजिशन थिबो सब सेम प्रकार थिबो। heterogeneous mixture होछि कोन जो मिक्सचर रे प्योर सब्सटेंस सब भिन्न डिफरेंट प्योर सब्सटेंस डिफरेंट मैटर थिबो सेटा होछि कोन heterogeneous mixture। बुझिबलो तापरे both type of mixture can be separated into their compounds। एही जो मिक्सचर अछि homogeneous mixture और heterogeneous mixture ये भी सेपरेट ही पारिबो। केन सेपरेट हे पारिबो प्योर सब्सटेंस रु भी मिक्सचर को सेपरेशन करि हबो। केमिति करि हबो ना बाय केमिकल मेथड और बाय फिजिकल मेथड। ए केमिकल मेथड फिजिकल मेथड कोन सब अछि हमें परवर्ती चैप्टर माने को एक्सट्रैक्शन चैप्टर पढ़ले से चैप्टर में सब शिखिबा। जेनो अछि कोन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हला कोन एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल चेंज। एलिमेंट्स हला कोन एलिमेंट्स होछि प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट हला कोन प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कोन जोटा कि डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल चेंजेस द्वारा ताकू आउ सिंपलर आउ सब्सटेंस रे कन्वर्ट करी हबनी। द smallest particles of an element possess the same properties as the bigger particle। काहे कि ना एलिमेंट्स रो छोटो कणिकार प्रॉपर्टी जा थिबो देन बिग कणिकार भी प्रॉपर्टी सेम थिबो। सो एलिमेंट्स कोन हला कि ताको सिंपलर तार सिंपलर फॉर्म रे ताको हमें कन्वर्ट करि परबेन। कन्वर्ट करले भी किछि हमें ता भितरे किछि प्रॉपर्टीज रो किछि डिफरेंस पाइबानी। तार छोटो कणिकार जहा थिबो प्रॉपर्टी और तार बड़ कणिकार भी सी प्रॉपर्टी थिबो। बुझैला एई जो चार्ट अछि हमर मैटर जो डिफरेंट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन हमें को पढ़ावला। फिजिकल सॉलिड लिक्विड गैस अछि केमिकल में मिक्सचर then pure substance mixture फिर homogeneous heterogeneous हला pure substance कोन अछि compounds अछि elements अछि। ए compounds elements आगु हमें पढ़िबा। बर्तमान पढुथिले कोन elements and compounds। elements रे हम जाने जे ताकू छोट जते छोटो पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म रे ताकू कन्वर्ट भी करा जिवो ब्रेक करा जिवो फिर भी ता भीतर किछि प्रॉपर्टी रे किछि चेंज हबो। जो छोटो कणिकार जहा प्रॉपर्टी रहला बड़ कणिकार भी सेही प्रॉपर्टी रहिबो। बुझिला तापर अछि कोन an element can also be defined as a pure substance which consists of only one type of atoms।
एलिमेंट्स होची ताको भी डेफिनेशन डिफाइन करी हो जे गोटे या होची एक प्योर सब्सटेंस जोटा कि कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स को एक प्रकार एटम जहा भीतर थिबो सेटा होची कोन एलिमेंट ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ isotopes this definition does not seem to be correct isotope जब डिस्कवर हेलानी एलिमेंट रो ये जो डेफिनेशन ता अछि ए डेफिनेशन ता आधार फिट बसे नाही काहे कि ना এটা করেক্ট বসেন the modern definition of an element is that it is a simple individual modern definition কোন element হচ্ছে ଗୋଟେ a simple individual which has a definite atomic structure and has a definite position in the periodic table जो डेवलप केमिस्ट्री है ता अनुसार एलिमेंट डेफिनेशन कोन हबो जार ଗୋଟେ डेफिनेट एटॉमिक नंबर थिबो and has a definite position in the periodic table बुझला एलिमेंट डेफिनेशन सैला then it cannot be decomposed in a chemical change जोटा कि एलिमेंट को कोनोसी प्रकार केमिकल चेंज द्वारा ताको डिकम्पोज करा जाय परिबनी ताको ब्रेक करा जाय परिबनी इन केमिस्ट्री द एलिमेंट्स आर द केमिकल अल्फाबेट केमिस्ट्री रे एलिमेंट्स होजी कोन chemical alphabet compounds are the words that is combination of elements compounds होची are the words combination of elements हला chemical alphabet ये हला किसी chemical alphabet मिसी की जहाँ जोटा हबो सेटा हबो कोन ना compounds there are presently 117 different elements known 117 different element पर्यंत जाना अछि every element has been given a definite name every element को प्रत्येक गोटे definite name दिया जाय and for convenience a nickname which in chemical language is called a symbol प्रत्येक element को definite name दिया जाय एवं प्रत्येक नेम रो सब निकनेम भी अछि निकनेम को ए केमिकल लैंग्वेज भाषा रे कोन कहंती ना सिंबल कहंती एलिमेंट रो नेम अछि नेम रो निकनेम अछि से निकनेम को केमिकल लैंग्वेज रे हमें केमिकल लैंग्वेज रे कोन कह जाय ना सिंबल कह जाय सिंबल इज ए स्मॉल अब्रिविएशन टू रिप्रेजेंट ए फुल एंड लेंथी नेम ऑफ एन एलिमेंट सिंबल होची कोन गोटे स्मॉल अब्रिविएशन टू रिप्रेजेंट ए फुल एंड लेंथी नेम गोटे बड़ नाम को पढ़िया अपेक्षा तार गोटे सिंबल को पढ़ी देले सहज हबो सेटा होय तार गोटे स्मॉल अब्रिविएशन से सिंबल सब कोन केमिति डिराइव करा वाला बाय टेकिंग द फर्स्ट लेटर of the name of the element first letter element of first letter को निया जो इंडिया ऑक्सीजन नाम है ऑक्सीजन फर्स्ट लेटर कोन ओ हला ऑक्सीजन एलिमेंट रो होता सिंबल ओ नाइट्रोजन हला कैपिटल एन फ्लोरीन हला कैपिटल एफ यूरेनियम हला कैपिटल यू आयोडीन हला कैपिटल आई सल्फर हला कैपिटल एस हाइड्रोजन एच कार्बन सी बढ़िया सी कैपिटल सी और फास्फोरस हला कैपिटल पी एटा हला तार ए बेला फास्ट तार नेम ने हबो नेम रो फर्स्ट लेटर को ओ सिंबल हबे भी निया जाय एटा हला गोटे मेथड आ गोटे मेथड कोन और बाय टेकिंग द फर्स्ट लेटर एंड वन मोर लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट लेटर को निया जिवो एवं वर्ड ता अछि वर्ड फिर आ गोटे लेटर को नै कि सिंबल भी करा जाय पर जेमि कैल्शियम रे सी निया वाला तापर ए निया ला सी हला कैल्शियम रो सिंबल मैग्नीशियम रे एमजी क्लोरीन रो सीएल निकेल रो एनआई कोबाल्ट रो सीओ ब्रोमीन रो बीआर एल्युमिनियम रो एल बिस्मथ रो बीआई एंड बेरियम रो बीए से बढ़िया एटा गोटे सेकंड मेथड सिंबल को जानिबार आ गोटे मेथड कोन अछि ना और फ्रॉम नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स in other languages such as Latin, German, etc. Word रो सब एलिमेंट्स मानकर सब वर्ड अछि तर नेम अछि नेम रो फर्स्ट लेटर के बता भीतर गोटे फर्स्ट लेटर नै हबो कि आ गोटे लेटर नै कि तर नेम पर हसला आ एवं थर्ड मेथड कोन करा होछि तर लैटिन नेम नै आ जीवो किबा तर जर्मन नेम नै लैटिन नेम नै आ जी जर्मन नेम नै आ जाय कि तार सिंबल को तैयार करा छै सोडियम रो जो लैटिन नेम होछि कोन नाइट्रियम NaTriUm हेले सोडियम रो सिंबल है जिवो Na कॉपर लैटिन नेम है जिवो क्यूप्रम Cu आयरन रो फेरम आयरन हला लुहा रो Fe हला फेरम सिल्वर अर्जेंटम हला Ag लेड हला प्लम्बम हला Pb धनी हला तापर आसी गोल्ड हला ए कोन
पोटासियम पोटासियम हूँ कौन सिंबल के नाम कौन कालियम मर्क्यूरी मर्क्यूरी है पारद पारदर है हाइड्राजीरम हाइड्राजीरम है Hg है टंगस्टन से डब्ल्यू डब्ल्यू तार जर्मन नेम कौन वोल्फ्राम भी सिंबल नेम सब निया जाई पारे जानि केमिति सिंबल सब आसिला एलिमेंट्स रो सिंबल आसिला तापर आसी कोन एमते नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स 1H1 एटा होचे आइसोटोप एटा 1H1 हला हाइड्रोजन गोटे आइसोटोप हाइड्रोजन तीनटा आइसोटोप अछि एटा हला प्रोटियम तापर यूरेनियम रो एटा गुडा आइसोटोप 92 यूरेनियम 238 एटा हला हेवीएस्ट एटम लाइटेस्ट एटम हला 1H1 हेवीएस्ट एटम हला 92 यूरेनियम 238 देन आछि कोन मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट is made up of small number of elements कहने अर्थ रे सब एलिमेंट सब मिलुची फर्स्ट साइंटिस्ट माने को डिस्कवर कले अर्थ रे डिस्कवर कले मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट is made up of a small number of elements only 10 of the naturally occurring elements make up to 90% of the earth crust oceans and atmosphere अर्थ रे जते सब एलिमेंट्स माने मिलुची बहुत स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट मिलुची किंतु ओनली 10 ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स मेक अप टू जति की भी अल्प परिमाण रे एलिमेंट्स मिलुची ता भितर 90% मास केवल 10टा नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 90% मास को अर्थ क्रस्ट नै आछंती ओशियंस और एटमॉस्फेयर जति सब एलिमेंट आछन केवल 10टा नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 90% मास नै आछंती एला बहुत स्ट्रेंज कथा Then if the entire inverse is considered, then 90% of matter is hydrogen. If we entire inverse consider करबा 90% है जो कि hydrogen. Helium then second as जीवा first as जीवा hydrogen, तापर as जीवा helium, and the remaining elements make up to 1% of the universe. With oxygen, neon, carbon, nitrogen next in order of decreasing abundance. सबुठार अधिक universe रे मिलिबो को एलिमेंट हाइड्रोजन रे मिलिबो हाइड्रोजन रे फिर केते मिलिबो 90% हाइड्रोजन रे मिलिबो तापर आसीबो हीलियम तापर आसीबो के तापर आसीबो ऑक्सीजन कार्बन नियन कार्बन नाइट्रोजन एंड एई अनुसार डिक्रीजिंग ऑर्डर अनुसार जीवो सबुठार अधिक के रहउची ना हाइड्रोजन रहउची फिर सेटा केते 90% रहउची तापर रहउची हीलियम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन रे पड़ी पारे ई क्वेश्चन सब बोर्ड परीक्षा रे भी पड़ी पारे किंतु बेसी पड़ी पारे कोठी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानन रे एई शॉर्ट क्वेश्चन सब पड़ी पारे सो कॉम्पिटिटिव पिला मानो पई एई जीव चैप्टर भी पढ़िया भी बहुत निहाती दरकार आउट ऑफ 117 एलिमेंट्स 117 एलिमेंट्स हमर डिस्कवर करा है छी नोन अछि केते 88 टा नोन अछि नोन हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस 88 टा जो नोन अछि से ताको आइसोलेटेड करा है छी नेचुरल सोर्स रो आइसोलेट करा है छी और रिमेनिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मीन आउ जो रिमेनिंग रहिला 117 लगते 88 गला अब बाकी रहले केते 9 10 29 और रहले केते 29 टा एलिमेंट अछि जोटा कि आर्टिफिशियल मीन से ताको कोन ना प्रिपेयर कराइ छै जोटा कि मैन मेड एलिमेंट्स जोटा कि आर्टिफिशियल मीन ताको प्रिपेयर कराइ छै 88 टा नेचुरली मिलछि एवं 29 टा आर्टिफिशियल मीन रे प्रिपेयर कराइ छै मैन मेड एलिमेंट्स हला से कि नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरिशियम क्यूरियम बर्केलियम कैलिफोर्नियम आइंस्टाइनियम फॉर्मियम मेंडेलियम नोबेलियम लॉरेंशियम कुचोबस्टियम हानियम सोबरबोजियम नील्सबोरियम हैसियम मेरिनियम उलुमियम ए सब अछि ए सब किछि हमर साइंटिस्ट नेम अनुसार अछि किछि देशर नाम अनुसार सब तैयार अछि 29 टा हला कोन 29 टा हला मैन मेड एलिमेंट्स देन तापर कोन अछि मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स all the elements may be classified into two groups प्रत्येक एलिमेंट जो एलिमेंट हम पढ़िले मैन मेड होंतु किंबा नेचुरल अकरिंग होंतु से ताकू दी भाग रे क्लासिफाई करा जाई पारे सो दी भाग कोन जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से दी भाग ले के फर्स्ट हला मेटल्स सेकंड हला नॉन मेटल्स which the division is based on both physical and chemical property physical and chemical property रे आधार करिकि जत्ते सब एलिमेंट अछि ताकू दी भाग रे विभक्त करा जाय पारे दी भाग रे क्लासिफाई करा जाय पारे से हला के मेटल्स हला आ हला कि नॉन मेटल्स चल मेटल्स कोन मेटल्स आर regarded as those elements which possesses the following properties वो ए प्रॉपर्टी सब जहां माने करथिबो से माने मेटल्स से प्रॉपर्टी सब कोन दे आर generally solids and ordinary condition Mercury is an exception which is in liquid state. So metal of first property कौन से माने solid रे रहबे ordinary temperature condition normally naturally से अवसर से कोला थिबे ना solid थिबे
तांको भितरे जड़े एक्सेप्शन होची कि मर्क्यूरी एचजी जोटा कि लिक्विड अवस्था रे थाए एटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी पारे एचजी मर्क्यूरी दे आर लस्ट्रस इन नेचर लस्ट्रस माने होची से माने चंकु थिबा lustrous in nature. They possesses high density. सेमानक डेंसिटी हाई थिबो. They are good conductors of electricity and heat. सेमानक द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही बाथो हीट भी फ्लो ही बाथो. They are malleable and ductile. Malleable means जोटा कि एमिति मोड़ी देने मोड़ी से होथबो. जेम जोटे आयरन रड तेन मोड़ी दबो जदी भांगी बनी किमसे मोड़ी हे जिवो जे शेप जो करबो से शेप रे मोड़ी जिवो. एटा होतरा malleability property and ductile. A property टा कोन कोन थी malleable and ductile. They possess generally high melting and boiling point. सेमानकर boiling point melting point कोन थिबो high थिबो. They react with mineral acids liberating hydrogen. सेमाने mineral acid तो react करिक कोन सेमाने form liberating hydrogen. Mineral acid HCl ए सब HCl से माने react करिक hydrogen प्रोड्यूस करथुवे. दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड से जो सेमाने ऑक्साइड से तो सेमाने फॉर्म करथुवे कोन बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करथुवे. एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म न करे सेमाने बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करथुवे. दे फॉर्म नॉन वोलेटाइल हाइड्रोजन इज कंबाइन विथ हाइड्रोजन. सेमाने कोन फॉर्म करिवे तो नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड फॉर्म करथुवे. नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड फॉर्म करथुवे कंबाइन विथ हाइड्रोजन. जदी हाइड्रोजन तो कंबाइन करिके सेमाने नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड फॉर्म करथुवे. They have molecules usually monoatomic in their vapor state. सेमान vapor state रे monoatomic है जानते हैं. Sodium, calcium, aluminum, copper, silver, zinc, iron, nickel, gold, mercury, etc. Examples of metal. इटा हला examples किसी दे दी जेता हमें periodic table पढ़ीबा. Periodic table लो left side रे जाथिबे सेमान हेले सब कोन metal थिबे. हला इटा रे मन रखते left side रे जाथिबे सब मस्त हेले metal है. राइट साइड रे जाथिबे से हेबे सब नॉन मेटल. तांको मझिरे किछि रहि जिवे सेमाने थेबे हेबे एमिति मझिरे रहि जिवे सेमाने हेबे कि ना मेटालॉइड हेबे. एटा रे इंपोर्टेंट इनसो. तापर मेटल्स रा में प्रॉपर्टी पढले तापर पढिबो कार प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स रा प्रॉपर्टी. नॉन मेटल्स रा प्रॉपर्टी सब कोन द नॉन मेटल्स डू नॉट शो द एबव प्रॉपर्टीज. ए जो सब प्रॉपर्टी मेटल्स रा पढिले डक्टाइल अछंती कि माल्येबल अछंती कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट गुड इलेक्ट्रिसिटी में हीट गुड कंडक्टर्स कि हाई डेंसिटी जे मानकर किछि प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स मानकर नथिबो. 3 और 6 ऑफ द नॉन मेटल्स आर कार्बन बोरॉन फास्फोरस सल्फर सेलेनियम आयोडीन आर सॉलिड्स. ए जो 6टा नॉन मेटल पढिले सेमान सब कोइते थांती सॉलिड थांती. फर्स्ट कथा हला नॉन मेटल रो मेटालिक प्रॉपर्टी नथिबो किंतु मेटालिक प्रॉपर्टी फर्स्ट गोटे कोन दे आर जनरली सॉलिड्स इन ऑर्डिनरी टेंपरेचर कंडीशन. ऑर्डिनरी कंडीशन में मेटल माने सॉलिड थांती किंतु नॉन मेटल भीतर ए 6टा एलिमेंट जे कि सॉलिड रे थांती. से हेले कि कार्बन बोरॉन फास्फोरस सल्फर सेलेनियम एंड आयोडीन. तापर कोन ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर. जेमिति मर्क्यूरी मेटल भीतर मर्क्यूरी कोन थाय लिक्विड थाय से भडिया नॉन मेटल रे ब्रोमीन थाय कोन लिक्विड भाबे थाय. Remaining non-metals nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, hydrogen, helium, argon, neon, krypton, xenon and radon are gases. ये सब non-metal हेले कि सब gas हेले. Non-metals are generally brittle. Brittle means भंगुर. Non-lustrous. Non-lustrous means सेमानकर किछि प्रमुख बा गुण नाही. Having low melting and boiling point. सेमानकर melting boiling point कोन low थाए. Non-conductors of heat. सेमानले heat रो non-conductor. Capable of फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड. से माने ए माने फॉर्म करियो कोन बेसिक ऑक्साइड मेटल फॉर्म करी बेसिक ऑक्साइड ए माने फॉर्म करिवे एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड. से माने एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करबे और न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करबे. नॉट कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. एसिड साइड ऐड करी कि हाइड्रोजन के फॉर्म करबे नि कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वोलेटाइल हाइड्राइड्स. माने वोलेटाइल हाइड्राइड फॉर्म करबे. एबे देखिया कोन मेटालॉइड्स. Metalloids कोन there are some elements which do not fit completely into either the metal or non-metal class. जे एलिमेंट अछंती जो एलिमेंट माने either metal property रे भी सेमानकर जिबेनी non metal property रे भी सेमाने जिबेनी. Elements which have some properties of both metal and non-metals are called semi-metals or metalloids. जो मानकर both metallic property थिबो as well as non-metallic property भी थिबो सेमाने कोथरे जिबे मेटलॉइड्स से जिबे. द सेमी मेटल्स आर सिलिकॉन. से सब सेमी मेटल्स और मेटल्स हेले के सिलिकॉन जर्मानियम
arsenic, antimony, and tellurium. The pasta है कि non-metalloids. The above classification of elements is one of certain metals like lithium, sodium, potassium possesses low density. Certain non-metals like hydrogen and graphite are good conductors of electricity. Metals rarely combine with one another, while non-metals combine with one another to form compounds. Metals and non-metals commonly combine with each other to form compound. metal ଭିତରେ combine ହେଇକି କଣ କରନ୍ତି compound form କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ non-metal ମିଶିକି କଣ କରିବେ compound ବି form କରିବେ and metal ଆଉ non-metal ବି ମିଶିକି compound form କରିବେ ଏବେ ଆମେ compounds ର formation ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ କଣ ଶିଖିବା ଯେ compounds ସବୁ କଣ compounds are pure substance that are composed of two or more different elements in a fixed proportion by mass. So compounds है कौन? Compounds है कि pure substance. They are composed of two or more different elements. दीटा कि बात तो अधिक element मिसिकी ଗୋଟେ fixed proportion of mass रो fixed proportion में से मिसिकी form है कौन ना compounds form है. Compounds containing more than four elements are rare. चारिटा element मिसिकी जो compound हवा जोटा कि rare. Hello, the properties of a compound are altogether different from the properties of elements from which it has been constituted. फिर आउट दर प्रॉपर्टी कौन जो एलिमेंट सब मिसिकी गोटे कंपाउंड हेबे से कंपाउंड रो प्रॉपर्टीज टा ए एलिमेंट्स मानकर प्रॉपर्टी थारु डिफरेंट रहबो कंपाउंडेड वाटर has a definite composition that is 11.2% hydrogen and 88.2% oxygen. Thus the two are present in the ratio of 1:8 by mass. The properties of water are totally different from the properties of hydrogen and oxygen both. So compound हम कौन है जो किसी दो बार तत्वधिक एलिमेंट मिसी के कंपाउंड है तार गोटे एग्जांपल देछि H2O. H2O रे 11.2% कौन अछि हाइड्रोजन अछि and 88.8% अछि कौन ऑक्सीजन अछि हमको रेशियो लेते 1:8 रेशियो मिसिकी फॉर्म है कि H2O फॉर्म है किंतु H2O रो प्रॉपर्टी कोन ये होची लिक्विड एमान सब हले कोन एमान हले सब गैस हले एलिमेंट और कंपाउंड भितर डिफरेंस आछी H2O H प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन केते रहउची हाइड्रोजन रहउची 11.2% बाय मास ये रोची 88.8% by mass किंतु हाइड्रोजन का भावे यूज हुए हाइड्रोजन कंबस्टन भावे यूज हुए ऑक्सीजन टा कंबस्टन में सहायता करे किंतु H2O केमिति भावे यूज हुए कंबस्टन को एक्सटिंग्विश करिवारे यूज हुए सो जानिया लगी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन रो पूरा उल्टा तरह प्रॉपर्टी हे जाउची H2O रो प्रॉपर्टी पूरा उल्टा हे जाउची बुझेरा गोटे कंपाउंड रू तार एलिमेंट्स मानू केमिति सेपरेट कराबो फिजिकल मीन द्वारा सेपरेट हे परबनी केवल केमिकल्स मीन्स द्वारा केमिकल प्रोसेस द्वारा तार कंपाउंड्स और तार एलिमेंट्स मानू separation करी हुए कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स फेयर कंपाउंड्स दो प्रकार अछि कोन कोन जे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स Organic compounds the compounds obtaining from living sources are termed as organic compounds. The term organic is now applied to hydrocarbons. Organic compound है कौन जो माने सब living compound रू जो मान living source रू जो compounds माने obtained है वैसे माने है कि organic compounds. से वाले inorganic compounds the compounds obtained from non-living sources such as rock minerals are termed as inorganic compounds. Non-living source रू जो सब compounds माने obtained है वैसे माने है कि inorganic compounds. The compounds of all elements except hydrocarbons, their derivatives, are included in this category. The number of organic compounds is very large in comparison to inorganic compounds. Organic compounds could form a living source, inorganic compounds could form a non-living source. So organic compounds परिमाणटा इज वेरी लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स परिमाण बहुत लार्ज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंपेयर करिबा जदी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स परिमाणटा बेसी लार्ज मिक्सचर कौन ए मिक्सचर इज ए मटेरियल containing two or more substance
either elements or compounds or both in any proportion. Mixture होउची सेथिरे सेटा होउची गोटे material से फेरे कोन थिबो two or more substance थिबो दुई किबा ततोधिक कोन थिबो ना element थिबो element मिसी compound हेले ना element थिबो कि compound थिबो मिसी की दुईटा थिबो सीधा हबो कोन जे mixture होतो कोन को जीवो दे mixture को जीवो substances which form a mixture are milled components are present in the mixture without loss of their identity. किंतु कंपाउंड रे जो सब एलिमेंट मिसी थिबो तारो प्रॉपर्टी टा डिफरेंस रहे किंतु मिक्सचर रे से मानकर कोनोसी प्रॉपर्टी टा लॉस हुए नहीं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो मु आगुर भी कहिथिनी मिक्सचर दुईटा होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस से जो हमें चार्ट रे पढिथिले होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर इज कंपोनेंट्स आर mixed uniformly to microscopic level. Microscopic level अति सूक्ष्म सूक्ष्म भाव यदि हम विचार करिया भी सेमाने यूनिफॉर्मली सबुआडे समान भाव सेमाने मिक्स हेथिबे तो कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सेमाने होमोजेनियस मिक्सचर सेमाने नेकेड आई रे देखा जिबे नहीं सेमाने केवल माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जिबे. The mixture is uniform throughout having a single phase. सेमानकर सिंगल फेज थिले भी सेमाने यूनिफॉर्मली चारियाडे मिक्स ही पार्थुबे. सिंगल फेज होची सेमानकर प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी गोटे प्रकार सेम थिबो. The homogeneous mixture is isotropic in nature, that is every portion of it has the same composition and properties. Homogeneous mixture होची कोन isotropic. Isotropic माने होची every portion प्रत्येक portion जे सेम कंपोजिशन थिबो सेम कंपोजिशन एवं सेम तारा प्रॉपर्टी थिबो सेटा हो कोन आइसोट्रोपिक. सो तारो जेम तारो एग्जांपल कोन इज always has the brass steel 22 karat gold solutions such as common salt dissolved in water, sugar dissolved in water, iodine dissolved in carbon tetrachloride, benzene in toluene, methyl alcohol in water, gasoline, a mixture of hydrocarbon, air. Extra some of examples of homogeneous mixture. Homogeneous mixture mean गोटे एलिमेंट से गोटे कंपाउंड मिसी रहिला तार सब ए जे एग्जांपल ब्रास हला स्टील हला 22 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड हला सॉल्यूशन सच एज कॉमन सॉल्ट डिजल इन वाटर कॉमन सॉल्ट डिजल हले यूनिफॉर्म मिसी जीवो. So आउ सेतिरे कॉमन सॉल्ट थरा से वाटर आउ जिंदिबो सेटा हिजबो होमोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर आउट हिजबो कोन मिक्सचर हले कोन हेटेरोजेनियस मिक्सचर. The heterogeneous mixture is not uniform. It can have two or more phases. The components can be seen by naked eye or with the help of a microscope. It has anisotropic property. Isotropic property is every portion of it has the same composition. So anisotropic property have every portion has not same composition properties. It's the same composition property, same proposition composition of properties same नथिबा सेटा हिजबो कोन anisotropic property. Another uniform throughout the mixture. Soil, a mixture of sulfur and sand. तार एग्जांपल कोन को सब देइछि एग्जांपल देइछि जे गोटे soil, mixture of soil, a mixture of sulfur and sand. सल्फर और सैंड मिसी जो मिक्सचर हबो जो सॉइल टा हबो सेटा हबो कोन हेटेरोजेनियस मिक्सचर रो एग्जांपल. ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड आयरन फिलिंग भी मिसी रहले वो मिक्सचर टा फॉर्म सेटा हबो कोन हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ तार एग्जांपल. आउट है स्मोक रे भिन्न प्रकार सब एलिमेंट सब रहउची कंपाउंड सब रहउची एसी भाबो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ए सब हला कोन हेटेरोजेनियस मिक्सचर रो एग्जांपल. से मानकर आनिसोटोपिक प्रॉपर्टी थिबो से माने नेकेड आई किंबा हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप भी देखा जाय पारथबे. सो मिक्सचर दी प्रकार हला मिक्सचर हला दी प्रकार गोटे हला होमोजेनियस आ गोटे हला हेटेरोजेनियस. नेक्स्ट क्लास में अलॉयज विषय पढिबा. अलॉयज कोन को सब ई क्लास सेति थाउ वीडियो टी संपूर्ण भाबे देखंतु एवं आम सहित जोड़ी होकर रुहतु. धन्यवाद.